The suit that's been filed by the Pinarayi Vijayan government has appealed to the Apex Court to pass a judgment declaring the Citizenship Act to be void. The Kerala government claims that Citizenship Act violates the fundamental right of equality. Kerala had in December passed a resolution in their assembly against the citizenship law, asking the centre to cancel the contentious legislation that has triggered widespread protests. The Supreme Court is already hearing over 60 petitions against the law, but it's important to remember here that Kerala is the first state government to challenge it in the court. The meeting convened by the Chief Minister of all party meeting. That meeting opposition leader also suggested that the joint, when they were discussing about the joint action, one of our opposition suggestion was to file a suit against this CAA. यह उनकी सद्बुद्धि है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी CAA के खिलाफ कई पिटीशंस पेंडिंग है। उसको उसमें से इसको भी एक और पिटीशन मानकर जोड़कर देखा जाएगा तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है ये कानून पूरी तरह संवैधानिक है और संवैधानिक दायरों में रहकर बनाया गया। Now, in the latest in the JNU violence case that rocked the campus on January 5th, the Delhi High Court has asked Google and WhatsApp to preserve the data while hearing the petition of 3 JNU professors. The High Court has also asked the Delhi police to submit CCTV footage as soon as possible. Meanwhile, in a massive impact of India Today's JNU tapes investigation, the Delhi police has served notices to all 4 activists exposed by India Today. Cops have asked Akshat Avasthi, Rohit, Komal Sharma and Geeta to join the probe. India Today has also accessed the Sabarmati hostel warden's report on the January 5th violence. The hostel warden says that more than 40 people wearing masks were first spotted inside the campus at 4 p.m. The report further states that the mob was looking for specific students to target. The warden in the report has said that the administration requested assistance from cops at 5:30 in the evening. Despite that, neither police nor extra security turned up at the university before 6:45. The warden's report also states that the masked mob consisting of 150 people stormed the hostels at 7 p.m. Remember, it's been 9 days since the masked mob attacked JNU students, but the Delhi police is yet to make any arrest. And a big development that's expected in the courts today. The Supreme Court will today hear the curative petitions of 2 Nirbhaya convicts who have been sentenced to death for rape and murder. The curative pleas have been filed by Vinay Sharma and Mukesh after a Delhi court sentenced them to death and ordered the hangings on January 22nd at 7 a.m. A 5-judge bench led by Justice N.V. Ramana will examine the curative petitions, which is the last legal remedy available to the Nirbhaya rapists. This as Tihar jail is ready for the hangings and all the preparations are underway in advance. So on Sunday, the dummy executions were performed inside the jail. The jail administration has also asked the convicts to pick a date to meet with their family members before the execution. सुप्रीम कोर्ट में दुनिया की आस्था है, हमारी भी आस्था है। मैं 7 साल संघर्ष करी हूँ, कई बार मैं हिल गई, कई बार मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं मेरा विश्वास न्याय व्यवस्था पे टिका रहा कि नहीं, हमारी बेटी के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई है, अगर हमारे संविधान में फांसी की सज़ा है तो इनको ज़रूर होगी, क्योंकि इससे खराब केस कुछ नहीं हो सकता और आज भी मेरी सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। We welcome the death sentence to this Nirbhaya given, and then we are also not expecting President also to give some kind of lifelong imprisonment for this Nirbhaya case. We are welcoming this death sentence to be continued, and we are expecting more than this speedy investigation and then speed up in justification, not even in the instance. लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उस पर कोई पुनर्विचार संभव है। अब न्यायालय ने जो फैसला दे दिया है उस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत विलंब पहले से ही हो चुका है।
Anisha Mathur is joining us live with more details on the story. Anisha, what time is this hearing expected to begin in the Supreme Court? And also, is this the last legal option available to the rapists? Okay, I'm not sure if Anisha is with us. The hearing is expected at 1:45 p.m. today. The hearing is expected at 1:45 p.m. today, where the 5 judges are going to hear this matter behind closed doors. We also have with us Advocate Seema, who is representing Nirbhaya's family members. Seema, what exactly are we expecting today, especially since only 2 curative petitions are here before court? मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये क्यूरेटिव पिटीशन जो है इनका डिसमिस किया जाएगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने भी ये सर्टिफिकेट दिया है क्यूरेटिव फाइल करने के लिए, उस पर भी ये बेंच एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी, क्योंकि जो 2013 सुप्रीम कोर्ट रूल है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि थ्रू सर्कुलर अगर इनका रिव्यू डिसमिस हुआ है देन इनके पास राइट है क्यूरेटिव में जाने का। बट ये जो रिव्यू इनका था वो ओपन कोर्ट हियरिंग हुई, प्रॉपर तरीके से इनको सुना गया, फिर ये सर्टिफिकेट कैसे दिया गया। और जो भी अगर देखिए जो AP सिंह जी ने ये क्यूरेटिव फाइल किया है विनय का, उसमें जो भी इन्होंने ग्राउंड्स उठाए हैं उन ग्राउंड्स पे ऑलरेडी SLP एंड रिव्यू में सुना जा चुका है, तो कोई भी मेरिट नहीं है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि डिसमिस होगा। ये एक इन्होंने जो ग्राउंड उठाया है उसमें कि बहुत सारी कंट्री में डेथ सेंटेंस को ख़त्म कर दिया गया है और इनकी एज को भी ध्यान रखा जाए। ये सारे मैटर्स, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं। एग्जैक्टली उठाए जा चुके हैं। तो एक तो ये कि इनके पास कोई भी मेरिट नहीं है, कोई न्यू ग्राउंड नहीं है, इसलिए ये डिसमिस हो जाएगा। So as you can see, Nirbhaya's parents' lawyer, of course, very confident that this curative petition will be dismissed. We'll have to see what the court does at 1:45 when the hearing happens behind closed doors. And remember, two other accused still remaining to file their curative petitions. Back to you. Okay, Anisha, thanks for getting us that input and also getting us the voice from Nirbhaya's counsel. Let's also take a look at this exclusive conversation that we had with the hangman, Pawan Jhallad, where he in fact explains exactly how the execution will be carried out at the Tihar jail. चलिए, आप तिहाड़ जेल पहुंच गए, अब आपका वहां पे क्या काम होगा? मेरा काम होगा, मैं चेक करूंगा, अपने आराम पर देखूंगा, फिर उससे मीटिंग बैठेगी। भाई पवन, आपने केस कैसा करा, आपने आप करते हो या नहीं करते थे, हमें ट्रायल दिखाइए। फिर मैं उनको भाई तख्ता चेक करूंगा, भाई कितना बड़ा चार जने आ सकते नहीं एक साथ 4 जने, मैं वो क्या कर दूंगा, 4 आ जाएंगे एक साथ चारों को फांसी लगा जाएगी। 2-3 चीज़ें मैं एक-एक करके आऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि आप जिस जगह पे फांसी दी जानी है उस जगह को आप देखते हो। जी। तिहाड़ जेल में इतिहास ये है कि तिहाड़ जेल में अभी तक एक साथ सिर्फ 2 फांसी हुई है। जी। जो फांसी कोठी है वहाँ पे जो तख्ता है उस पर एक फांसी हुई है। जी। ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा विस्तार से आप समझाएं कि एक तख्ते पे तिहाड़ में ये हो चुका रंगा बिल्ला के साथ, क्या उसी एक तख्ते पे दोनों को खड़ा किया जाता है या 2 फिर अलग अलग तख्ता बनाना पड़ता है, कैसे? तख्ते पे एक तख्ते पे मान लीजिए इस टेबल के बराबर, इससे बड़ा ही होगा, लेकिन ये मान लीजिए एक तख्ता है, फिर वो 8-10 फुट का होता है। ठीक है, 4 आदमी बैठेंगे आराम से। चलिए, ये तख्ता है, इस पे खड़ा कर दिया एक साथ। जी, मगर रस्से 4 होना चाहिए। रस्सी 4 होना चाहिए। ये लकड़ी का तख्ता है, लीवर साइड में होता है, लेकिन एक तख्ता जो आमतौर पे बनाया जाता है वो तो एक ही के इंसान के लिए होता है कि एक को फांसी एक वक्त में देना। अगर 4 आ गए तो 4 को तो करनी पड़ेगी, एक आ गए तो एक को करनी पड़ेगी। तख्ता कमजोर हुआ तो तख्ते बहुत हैवी होते हैं, बहुत हैवी तख्ते, मोटा तख्ता होता है, साल से का होता है, तो बहुत हैवी होता है। पर तिहाड़ में सिर्फ 2 लोगों को ही आज तक दिया गया है, तो 4 का तो आपने ट्रायल भी नहीं किया है कि 4 खड़े होंगे कि नहीं होंगे। प्रोसीजर देखेंगे वहाँ पर क्या प्रोसीजर है, 2 को लगाइए 4 को लगाइए, प्रोसीजर देखेंगे वहाँ पर क्या इंतजाम करने हैं क्या नहीं करने हैं। ये तो वही जाके क्लियर करोगे जाकर कि भाई 4 को एक साथ हो सकती है या 2। We're getting you an update on an avalanche that's been reported in Jammu and Kashmir. This is 3 army soldiers who've lost their lives, and at this point 5 soldiers are still trapped after an avalanche hit their position in the Machal sector in Kupwara district. Sources in the army say that multiple avalanches have hit the posts in Rampur as well as in Gurez sector in Kashmir. 5 civilians, we're being told, have also died in this avalanche in Ganderbal district.